राइट और रॉन्ग? आमिर खान इज द मिस्टर परफेक्ट, तो अरिथमेटिक मीन इज द मिस्टर परफेक्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज द बेस्ट measure of central tendency. It is the best measure of central tendency. It is the best measure of central tendency. It is the best measure of central tendency, and in one word, it is average. That is total value by total number. Total value by total number. Total value by total number. टोटल वैल्यू बाय टोटल नंबर. क्लियर? अरिथमेटिक मीन में क्या बोल रहे हैं? इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज आल्सो नोन एज एवरेज. टोटल वैल्यू बाय टोटल नंबर. क्लियर? नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सर इसको गौरी खान क्यों बुलाते हैं? गौरी खान के मूवीज को अंडरस्टैंड करना इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी टफ टू कंप्यूट. देखो टफेस्ट. इट इज टफेस्ट. इट इज टफेस्ट. क्लियर? नाउ हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन का पहले डेफिनेशन लिखो. हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values. Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values. Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values. Sir, why do you call it? ऋतिक रोशन, जिंदगी ना मेरी दोबारा में एक सीन था, ऋतिक रोशन गाड़ी के बाहर अपना हाथ ऐसे करता है, तो दिस इज हार्मोनिक मीन. लुक एट द हैंड. विद जो डेफिनेशन है वो ऐसे ही जाएगा. हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल्स. अगर समझ में नहीं आ रहा है, समझाना है हार्मोनिक मीन किसी को, तो जस्ट वेव योर हैंड्स एंड द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड यस दिस इज हार्मोनिक मीन. व्हाई? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का रेसिप्रोकल निकालते हैं. उस रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल इज हार्मोनिक मीन. फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट x दिया रहेगा. x का रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/x. इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और इसका जो रेसिप्रोकल निकलेगा दैट इज हार्मोनिक मीन. बिना कोई फॉर्मूला के आंसर निकलेगा. सर x का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, जो वैल्यूज आया उसका एवरेज निकालेंगे. एवरेज का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज व्हाट? हार्मोनिक मीन. तो व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल्स. क्लियर? नाउ देयर आर few important things which we need to learn in AM, GM and HM. One of the most important thing is AM is greater than equals to GM, greater than equals to HM. AM is greater than equals to GM, greater than equals to HM. For two numbers, AM into HM equals to GM square. For two numbers, AM into HM equals to GM square. AM into HM equals to GM square. This is a very important thing. AM greater than equals to GM greater than equals to HM, and for two numbers, AM into HM is what? GM square. Clear? Now, come to the formula sheet, page number 3. Come to the formula sheet, page number 3. Come to the formula sheet, page number 3. Formula number 1 for unweighted data मतलब होता है सिंपल डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो. ठीक है? स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट इट डाउन. स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड कैपिटल N का मतलब होता है समेशन f टोटल फ्रीक्वेंसी. एंड कैपिटल N का मतलब होता है समेशन f टोटल फ्रीक्वेंसी. एंड कैपिटल N का मतलब होता है समेशन f टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है? तो सी द फॉर्मूला फॉर अनवेटेड डेटा. इट इज समेशन x by स्मॉल n.
just add the values and divide it by number of terms. Formula number 2 for weighted data, summation fx by capital N, पहले f into x का कॉलम बनाएंगे and then उसका टोटल करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से. Step 2 step deviation method, the formula is ax plus summation fd by capital N, जहां पर d का मतलब क्या है, x minus a by I, and I is what, class gap, that is class length. कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब ग्रुप 1 का टोटल प्लस ग्रुप 2 का टोटल होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप. लिख लो बगल में, ग्रुप 1 का टोटल प्लस ग्रुप 2 का टोटल होल डिवाइडेड बाय ग्रुप 1 का टोटल प्लस ग्रुप 2 का टोटल होल डिवाइडेड बाय total number of person in all the group. Total number of person in all the group. अब मान लो 3 ग्रुप होता तो ग्रुप 1 का टोटल प्लस ग्रुप 2 का टोटल प्लस ग्रुप 3 का टोटल होल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ all the groups, total number of people in all the groups. Coming to number 4, summation f into x minus x bar is equals to 0. This is sum of the deviation of the variables from am is 0. Property है देखो, sum of the deviation of the variables from am is 0. फॉर्मूला नंबर 5 में क्या करना है, प्रोडक्ट करके nth क्यूब निकाल देना है और फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वेरिएबल टू द पावर फ्रीक्वेंसी होल टू द पावर 1 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. एक सिंपल सा टर्म है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है वी यूज स्मॉल n और जब फ्रीक्वेंसी रहता है वी यूज कैपिटल N. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द फॉर्मूलाज. जहां फ्रीक्वेंसी रहता है वहां हम लोग यूज करते हैं कैपिटल N, जहां फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है वहां वी यूज व्हाट, स्मॉल n. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन. क्या बोल रहा है, वही रेसिप्रोकल निकाला है. आज तुम लोग खुद सोचो रेसिप्रोकल का एम कैसे निकलता, 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by dot 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 plus 1 by xn whole divided by n. वो तो क्या निकलता, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल. हम लोग उसका उल्टा, समझ रहे हैं, हम लोग को उसका उल्टा निकालना था, इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया, n divided by reciprocal of the numbers. What is the formula? Number of terms divided by sum of the reciprocal of the numbers. ये फ्रीक्वेंसी रहेगा तो f से मल्टीप्लाई कर दे रहे, f by x का टोटल एंड किससे डिवाइड कर रहे, कैपिटल N से कर रहे. नेक्स्ट 8 नंबर हम अभी सीखे थे, am greater than equals to gm greater than equals to hm. लिखो, जब कुछ नहीं बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे. जब कुछ नहीं बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे. जब कुछ नहीं बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे. अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन बोल देगा, we will use only greater than sign. अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन बोल देगा we will use only greater than sign. अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो खाली इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे. अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो खाली इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे. अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो खाली इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे. नेक्स्ट अगेन वी कम डाउन टू द टॉपिक दैट इज मीडियन. सर यहां पर आप शोले का जेलर क्यों लिखे हैं? शोले पिक्चर में जेलर एक डायलॉग मारता है, वो डायलॉग का मतलब ही मीडियन है. सर व्हाट इज दैट डायलॉग? द डायलॉग इज लाइक दिस, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं हम, आहा, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, जो बच गया वो मीडियन. दैट इज सपोज देयर आर 7 टर्म्स इन अ सीरीज, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7. 3 को इधर छोड़ दो, 3 को उधर छोड़ दो, बीच में कौन सा बच गया, 4th. इसका मतलब द पॉइंट एट विच 50% of the values are lying below and 50% of the values are lying ahead is called what? Median.
तो फोर्थ पोजीशन में जब हम खड़े हैं तो 3 पोजीशन मेरे से पीछे है और 3 पोजीशन मेरे से आगे है, इसीलिए फोर्थ पोजीशन को अपने क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन के नीचे लिखेंगे अपने मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू दैट इज 50% of the values are lying below, that is 50% of the values are lying below it, and 50% of the values are lying below it, and 50% of the values and 50% of the values are lying above it. You can see the formula page number 3 में point number 10. For ungrouped data, it is n plus 1 by 2th term. This n plus 1 by 2 is the rank of the median, and n plus 1 by 2 is position का जो value आएगा, that is value of the median. तो median is not n plus 1 by 2th term. Median is value of n plus 1 by 2th term. एग्जाम में बोला there are 7 terms in a series. Find the rank of the median. आंसर क्या होगा? 7 plus 1 whole divided by 2, that is 4th. Rank of the median is 4. But if they ask the value, तो ascending order में जो 4th position का जो value होगा, that is called what? Median. तो rank of the median is different from median. Median is value of n plus 1 by 2th term. Rank of the median is only n plus 1 by 2th term. Clear what I say now? Median is what? Value of n plus 1 by 2th term. And what is rank of the median? Only n plus 1 by 2th term. We'll write an example. Suppose there are 7 observations. Suppose there are 7 observations. Suppose there are 7 observations. Rank of the median. Rank of the median. Rank of the median is 7 plus 1 whole divided by 2. That is 4th term. Rank of the median is 7 plus 1. 7 plus 1 whole divided by 2. That is 4th term. Median is equals to median is equals to value of 4th term. Median is equals to value of 4th term when arranged in ascending order. 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 इसी से रिलेटेड एक चीज और है, that is how to calculate 4.5th term. How to calculate 4.5th term. How to calculate 4.5th term. That is 4th plus 5th whole divided by 2. 4th term का वैल्यू प्लस 5th term का वैल्यू whole divided by 2 करने से 4.5th term का आंसर आ जाएगा. That is simple. But how to calculate 4.25th term? Very simple. 4th term का जो वैल्यू आएगा बोलेंगे प्लस 0.25 ब्रैकेट में 5th term माइनस 4th term. 4.25 टर्म कैसे लेंगे? 4th टर्म तो लेंगे ही, प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट of the difference between the next term and the given term. Take a more example. How to calculate 4.70 term? That is, sir, 4th term. Integer part का जो value लेंगे plus fractional part का difference between the next term and the given term. 5th term minus 4th term. If you know how to solving median, you can easily calculate partition value of any kind, whether it's a quartile, decile or percentile.
सिर्फ मीडियन निकालना सीखना है, बाकी सब तो अपने आप। खाली क्या है, मीडियन में नीचे 2 आता है, क्वार्टाइल में 4 आ जाएगा, डेसाइल में 10 आ जाएगा, परसेंटाइल में 100 आ जाएगा। वी लर्न दैट लेटर ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। देखो पॉइंट नंबर 1, point number 1, check continuous or not. Point number 1, check continuous or not. If not continuous, if not continuous, if not continuous, then make it continuous. If not continuous, then make it continuous. Second point, calculate cumulative frequency less than type always. Calculate cumulative frequency less than type always. Calculate cumulative frequency less than type always. तो let us see cumulative frequency निकाल लिया 3, 5, 9, 12, 13 and mark last one as capital N. And mark last one as capital N. And mark last one as capital N. ये step 2 complete हो गया मेरा. Now we come to step 3. Find out rank of median. N by 2. Find out rank of median. N by 2. Find out rank of median. N by 2. Which comes to 6.5, which comes to 6.